Hello friend, this is Vishesh Bist and I'm gonna to give you a brief overview about franchising. So the topics we covered in franchising is meaning of franchise, parties involved in franchising, features of franchising, advantages of franchising, disadvantage of franchising and working of franchising system. So here we go. So guys, before starting franchising, we had to know the meaning of franchise. The term franchise means an arrangement under which a manufacturer grants to an individual or an enterprise the exclusive right to sell the former's product or services in a specified locality, subject to the terms and condition of the agreement. और हिंदी में कहें तो एक एग्रीमेंट जिसमें मैन्युफैक्चर किसी दूसरे पर्सन और एंटरप्राइज को अपना प्रोडक्ट बेचने का राइट देता है अगेंस्ट सम मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के अगेंस्ट पर सेल करता है वो अपना प्रोडक्ट. The second thing we had to know about franchising is the parties involved in the franchising. There are two parties involved in the franchising. The first one is the franchisor and the second one is the franchisee. The firm which grants the right is called the franchisor, or the person or an enterprise to which the right is granted is known as franchisee or franchise holder. It means जो पर्सन और एंटरप्राइज अपने राइट्स देती है उसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, और जो पर्सन और एंटरप्राइज को एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं और वो खरीदती है उसे हम फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइज होल्डर बोलते हैं. द एग्रीमेंट विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल बाय द फ्रेंचाइजर इज फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट. और जो एग्रीमेंट ये टर्म्स एंड कंडीशन बियर करता है और जिस एग्रीमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं सेल की बाय द फ्रेंचाइजर इज नोन एज franchise agreement. Thus, franchising is a contractual relationship between a franchisor and a franchisee. Examples of franchising are McDonald's, Bata Shoes, and IIT, and Apollo Clinics, which is healthcare. So guys, now we do the features of franchising. The first feature of franchising is two parties. In a franchisee, there are at least two sides, the franchisor and the franchisee. There can be more than one franchisee. It means that in a franchise, एक फ्रेंचाइजी में एटलीस्ट दो साइड होनी चाहिए, एक फ्रेंचाइजर और एक फ्रेंचाइजी. जो फ्रेंचाइजी है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए. द सेकंड फीचर इज रिटन एग्रीमेंट. देयर इज एन एग्रीमेंट इन राइटिंग बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी. इट मीन्स एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है. द थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव राइट्स. The franchisor owns a brand or trademark and allows the franchisee to use it in a specific area under a license. एक फ्रेंचाइजर का एक अपना ब्रांड और ट्रेडमार्क होता है जिसे वो फ्रेंचाइजी को अलाउ करता है टू यूज इन अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में अंडर लाइसेंस, एक लाइसेंस के थ्रू. द फोर्थ फीचर ऑफ फ्रेंचाइजी इज पेमेंट. The franchisee makes an initial payment for the license and becomes a part of the franchisor's network. He also pays a regular license fee for which it may be in agreed percentage or sales or profits. एक फ्रेंचाइजर लाइसेंस ग्रांट करने के लिए एक इनिशियल पेमेंट करता है फ्रेंचाइजर को और वो फ्रेंचाइजर के नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, और वो एक रेगुलर फीस, जो लाइसेंस की एक रेगुलर फीस होती है वो भी पे करता है फ्रेंचाइजर को, विच में बी एन एग्रीड परसेंटेज रेशियो. मीन्स वो परसेंटेज सेल्स और प्रॉफिट के परसेंटेज पर होती है. द फिफ्थ फीचर ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज सपोर्ट. द फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स एन असिस्टेंस टू द फ्रेंचाइजी इन द मार्केटिंग, इक्विपमेंट एंड सिस्टम. द फ्रेंचाइजर इनिशियली सेट्स अप द बिजनेस टू बी रन बाय द फ्रेंचाइजी. एक फ्रेंचाइजर जो होता है वो एक फ्रेंचाइजी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है मार्केटिंग में, इक्विपमेंट में, सिस्टम्स में, ट्रेनिंग में, और एक वो फ्रेंचाइजी को एक इनिशियल बिजनेस सेटअप करके देता है विच एट ऑल इट्स अ सपोर्ट. द सिक्स्थ फीचर ऑफ फ्रेंचाइजी इज स्पेसिफाइड पीरियड. द एग्रीमेंट इज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एग्जाम्पल 5 years. On the expiry of this period, the agreement may be renewed with the mutual consent of both the parties. जो एक
एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजिंग का, वो एक इनिशियल पीरियड के लिए होता है, लाइक एग्जांपल 5 इयर्स और 10 इयर्स, और उसकी एक्सपायरी, उस पर्टिकुलर पीरियड की एक्सपायरी के बाद वो दोबारा रिन्यू भी हो जाता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। Now we do the advantages of franchising. Firstly, we do the advantage of franchising to the franchisor. The first is the franchisor can enter into foreign markets and new territories in the domestic market safely and easily. The second advantage is the franchisor can expand his business without investing a large amount of money. The cost of new premises and extra staff is done by the franchisee. The third one is a regular income is received by way of royalty and fee from franchisee. And the fourth one is the franchisors get feedback about the needs and preferences of customer from the franchisees. Now, advantages of franchising to the franchisee. The first one is support and advice is available from the franchisor in respect of staff training and marketing. The second one is the franchisee can start his business with less initial investment than what is required without a franchise. And the third or last one is the franchisee gains from the well established name, brand and national advertising of the franchisor. So guys, now we do disadvantages of franchising. Firstly, we do disadvantages of franchising to the franchisee. The first one is the franchisor trade name and reputation may be tarnished if the franchisee does not maintain standard of quality and service. The second one is the franchisor has to provide initial financial assistance and specialist advice. And the third or last one is there are ongoing costs of supporting the franchisee and national advertising. Now we do disadvantages of franchising to the franchisee. The franchisee does not have complete independence in his business. The second one is the franchisee has to make payments of royalties on regular basis. And the third or last one is the franchisee may not be able to sell the business without the franchisor's approval. So guys, now we do our last topic of franchising, working of franchising system. We understand it by this diagram. Here the franchisor grants license to the franchisee and the franchisee pays an initial payment or periodic fee to the franchisor. This is how an franchising system works. So by this we had completed our topic of franchising.